Namaskar, I Jayoti, Dr. Soni, Faculty of Education and Mathology Department, Fashion and Interior from Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. खुश रहो बेटियों. Today our subject is fashion model drawing. In fashion model drawing, we are going to learn how to draw a fashion figure. It is a part 2. Now let's start. Move down to the next dash and sketch a smaller line that are just a little bit silent in the same direction as the hip line. This will make the waistline. This is the waistline. It is a measurement of waistline. हिप लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसे ड्रॉ करना है और इसे हिप लाइन से थोड़ा सा स्मॉलर बनाना है, just same as a shoulder line. The idea is to have the waistline just silently steady but not as silently as the hip line. In some cases you can leave this line straight. In some cases you can leave this line इन सभी केसेस अगर आपको जरूरत है तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं जरूरी है तो आप नहीं भी कर सकते हैं. इट इज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ योर मॉडल. Keep in mind that the waistline should be much shorter than the hip and the shoulder line. Don't cancel yourself the extra distance at the point as long as you keep the proportion in mind. जो भी आप स्केच बना रहे हो उसके प्रोपोर्शन को अपने माइंड में रखना है and then draw the sketch and draw the hip line. The next line. Note the distance between the waistline and the hip line. Use this half measurement and place a horizontal dash line along the vertical balance line at the distance down from the hip line. This will make the quote line. जब हम इन दोनों लाइन के बीच के सिमिलर मेजरमेंट को मेजर करके और बीच में इस डॉट को ड्रॉ करते हैं, that's called quote line. If this sound a bit confusing, use the sketch below a reference. The quote line might seem unimportant now, but it will actually help to draw the base to the figure. ये लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमें हेल्प करता है कि हम वेस्ट लाइन से जो हिप लाइन है उसके बीच के फिगर को किस तरीके से ड्रॉ करें. दिस कोट लाइन might seem unimportant now, but it will actually help when you are drawing the leg and capture the origin shape of the hip. जब आप हिप लाइन को एक्चुअली ड्रॉ करते हो तब ये जो मेजरमेंट है ये हेल्प करता है. Now for the concept the dot protect, we will connect the shoulder to the waist to the hip and the hip to the bottom. Center the dash on the bottom side of this figure. This will complete a root draft of the root and you will finalize start to see your fashion figure image from all the lines. जब आप इन सब लाइंस को एक साथ में जब आप मेजरमेंट करते हो, इन सब डॉट्स को बनाते हो, लाइंस को बनाते हो, उसके बाद में जाकर के जब आप इन सब को इमर्ज करते हो तब जाकर के जो आपका फैशन फिगर है वो सामने आ जाता है कि आपका फैशन फिगर की पोजीशन क्या है, आप उसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं. There are, however, a few basic proportion rules you should keep in mind. The shoulder should always be slightly wider than the hip. It is up to you how wide you want to make it as long as you fit this proportion in the mind. The waist can be thin or the wide as you wish. जो waist line है वो आपके proportion के according thin रखना है या waist wide रखना है ये आपके ऊपर depend होता है. It is depend on your fashion figure position. For a more dramatic fashion drawing, you can make the waist very thick. अगर आपको ड्रामेटिकल फिगर बनाना है, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ फैशन फिगर, तो आपका जो वेस्ट होगा बहुत ही ज्यादा थिन बनेगा. इट्स हेल्प टू ड्रॉ little marker on the horizontal line to note how wide you want the shoulder, hip and waist to be. Once you will note this marking connecting them with seam curves connected to line, it is easy to go for the shoulder down to hip and from the hip down to the waist on the both sides as shows in the image view.
See the image, and then I will explain. You know that line? This is the shoulder line, wrist line, hip line, and core line. And see the dots. These are help you to draw these lines. See the second picture. You complete these dots to match. Here also match the board draw with the little bit curve line. Same here, and it is your shoulder portion, it is your waist portion, and it is your hip portion, and it is a core line. The next, starting at the side hip, draw a semi-curved line to the edge of the lowermost dash line. Repeat this step on the both sides of the hip. See this? It is a little bit of curved line again, and match it with the core line. On the side where the hip is pointed up, add a small elegant from the hip line down in the order to give it a more original sketches figure. Use a image below a guide. जिस तरीके से इस इमेज में दिखाया गया है, आप उसी तरीके से अपने फिगर इस इमेज से गाइड होकर अपने फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं. Same here, this horizontal semi-curved line will make the underwear line. These lines are called underwear line. You will likely erase this later when dressing your fashion figure. However, drawing them at the stage will always need to get a better understanding of the three-dimensional aspect of the legs and the hips. The underwear line is also quite helpful in displaying the origin movement of the body. This will help you better visual fiber draping and the facility drawing the seams of the garment, especially when sketching pant or bottom. ये जो लाइन है, जो हिप्स लाइन है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम किसी भी फैशन फिगर पे बॉटम या फिर हम उनके पैंट ड्रेप करना है, तो दीज लाइन आर वेरी इम्पोर्टेंट. The last PPT is next. Let's focus on drawing the legs. Return to the vertical balance line. Make a dash line at the midpoint between the hip line and the bottom of the vertical line. This will make a general placement proportion of the knee. See the proportion of the knee first, partition into two parts. This dot is called knee line. It is very important. If you want to draw a leg, then this line is very important. We will show now for the trick part. Drawing the leg will take some pride and the error. Even get a little function. We will show you two leg placement to start with below. Once we can draw and understand the movement of these two examples, practical smooth vertical using the elements described. अगर आप इन फैशन फिगर को इनके पार्टीशन करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनको ड्रॉ करते हो, देन यू अंडरस्टैंड, लेकिन आप उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो कि हमें फैशन फिगर किस तरीके से ड्रॉ करना है, उसके प्रोपोर्शंस क्या होंगे, और कोई भी जो इसमें हिप लाइन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो वेस्ट लाइन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो शोल्डर लाइन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, द सेम द नी लाइन, द फोर्थ लाइन. आप इन सब लाइन के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने फैशन फिगर के कोर्सेज के अकॉर्डिंग इन लाइंस की यूज से आप अपने फैशन फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट पीपीटी. ओके, खुश रहो बेटियों. धन्यवाद.